Good morning friends, we continue with RTP November 2020. RTP November 2020. Let's start with question number 7. Question number 7 of RTP. This is redemption of preference shares. Very easy topic. Let's see what they have asked in this RTP. The following are the extracts from the balance sheet of Hari Limited as on 31st March 2020. Share capital 75,000 equity shares of 10 each fully paid up, 7,50,000. 2250 10% redeemable preferences of 100 each fully paid up, 2,25,000. Reserves and surplus में capital reserve 1,50,000, general reserve 1,50,000, profit and loss 1,12,500. So we'll say only two reserves are divisible profits, that is general reserve and P&L. On 1st April 2020, the Board of Directors decided to redeem the preferences at a premium of 10% by utilization of reserves. You are required to prepare the necessary journal entries including cash transactions in the books of company. Before we start with the problem, let's take an overall view of the redemption of preferences. First of all, what is redemption? It means repayment of capital to the preference shareholders. Redemption can be done in two ways. Either you can redeem the shares at par or you can redeem the shares at premium. If you redeem at par, means you are paying whatever you have taken from the shareholders in the past, and if you redeem at premium, means you are paying something extra. So that extra which you pay is known as premium on redemption, and that is a loss to the company. So if you are redeeming the shares at premium, it should be debited to an account which is known as premium on redemption account, and the premium on redemption should be written off against P&L or general reserve as the case may be. P&L use कर सकते हैं या तो general reserve. Okay. Redemption can be done out of two sources, either by making fresh issue of shares in the market or by utilizing the free reserves. Either by making fresh issue of shares in the market or utilizing the free reserves. See, if you utilize the reserves, then the face value of the preference is redeemed. See, if you do the redemption by utilizing the free reserves, then the face value of the preference is redeemed should be transferred to CRR. The amount of reserves which you utilize to redeem the face value of the preferences, that equal amount should be transferred to CRR. This is as per the Companies Act 2013. That's it. These are the provisions, and there is an entry format. First entry would be sale of investment, if any. Second would be fresh issue, if any. Third will be redemption due. मतलब आप इन्फॉर्म करोगे प्रेफरेंस होल्डर्स को. फोर्थ विल बी POR राइट ऑफ, प्रीमियम रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ. फिफ्थ विल बी ट्रांसफर टू CRR, and the sixth step will be payment to preference holders. So let's start. In this case, redemption is at premium. Redemption is at premium, and the redemption is out of free reserves because there is no fresh issue mentioned in the problem. So let's start. This is Journal of Hari Limited. Very easy problem they have asked. Date. This would be my particulars. Let's start. There is no sale of investment, there is no fresh issue. Let's start. This is 1st April पे उन्होंने redemption चालू किया, तो all dates will be on 1st April 2020. It is 10% redeemable preference share capital account debit. Redeemable preference share capital account debit to preference shareholders. You can write PSH, there is no harm in that. You can write PSH, preference shareholders. First of all, one second, before I write to preference shareholders, fresh issue नहीं है, sale of investment नहीं है, fresh issue नहीं है, redemption due. This is redemption at premium, so premium on redemption account debit भी होगा, and it will be to preference shareholders. Let me write the full form. Preference holders account. What is the amount of preferences that we have? 2250 of 100 is 2,25,000. इसका 10% प्रीमियम मतलब 22,500
and the total comes to 247,500. Being preferences redeemed at premium. Redeemed at premium. Next 1420. रिडम्पशन ड्यू हो गया. अब क्या करेंगे, पीओआर राइट ऑफ करेंगे. सो विल राइट इट ऑफ इट प्रॉफिट एंड लॉस. विल यूज पीएनएल अकाउंट. सो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीओआर. प्रीमियम रिडम्पशन राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा. 22,500. being POR written off. Next, transfer to CRR करना पड़ेगा because there is no fresh issue. So whatever preferences we have redeemed, equal amount should be transferred to CRR. So what is the face value of the preferences? 225. Do we have general reserve? No, we have 1,50,000 only. So balance will be utilized from P&L. Capital reserve cannot be utilized to redeem the preferences. It is a non-divisible profit. So let's utilize general reserve entirely. General reserve account debit 1,50,000 पूरा. Profit and loss account debit 225 में से 150 मतलब 75,000 का P&L यूज करेंगे. We have sufficient P&L, don't worry. To CRR. This is 2,25,000. Being profits transferred to CRR. Being profits transferred to CRR. And the last entry will be payment to preference shareholders. That is 1,420 preference shareholders account debit to bank account. How much? 2,47,500. Being preference shareholders paid off, you can use the word PSH, there is no harm. Being preference shareholders paid off. That's it. Very small and sweet sum. We have completed this. Now, I hope this is clear. Very, very एकदम सिंपल. Redemption due, POR write off, transfer to CRR and payment to preference shareholders. This is it. We move for the next problem. Let me clear this. Question number 8 of the RTP November 2020. Let's start with question number 8 of November 2020 RTP. It is about redemption of debentures. So now redemption of debentures देखेंगे. Please read the question properly. Please read the question properly. क्या पूछा है देखो redemption of debentures में. Okay, I hope you have read the question, gone through the question properly. Let's read the question. This is question number 8 of the RTP, that is redemption of debentures. Let me write here. Question number 8, redemption of debentures. Let's start.
XYZ Limited has issued 1012% convertible debentures of 100 each. Total 1000 debentures है 100 each के. 12% is the rate of interest. Redeemable after a period of 5 years. कितने साल के बाद redeem होने वाले? 5 years के बाद. According to the terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. The debentures were redeemable at a premium of 5%. So redemption at premium. The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holdings into equity shares of 10 each at a price of 20 per share and the balance in cash. अब उनको एक ऑफर दिया गया था कि जिस दिन रिडम्पशन होगा उस दिन आप अपने जितने डिबेंचर्स है उसका 20%, मतलब 1000 डिबेंचर्स है उसका 20%, that comes to 200 डिबेंचर्स. 200 डिबेंचर होल्डर्स हैव एन ऑप्शन टू गेट देमसेल्व्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स 10 वाला 20 में इशू होने वाला है. डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 20,000 ऑप्टेड टू गेट देयर डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटीज. अमाउंटिंग टू 20,000 मतलब 200 डिबेंचर्स ही हुए वो. अमाउंटिंग टू 20,000 मतलब 200 डिबेंचर्स हुए और उसका 20%. कंफ्यूज मत होना, उनको 20% ऑफ द होल्डिंग्स दिया है, ऑफ द होल्डिंग्स. अभी जो भी उनके पास होल्डिंग होगा, जो डिबेंचर होल्डर्स के पास जो होल्डिंग होगा उसका 20%. तो 20,000 रुपीज के डिबेंचर्स, दैट मीन्स 200 डिबेंचर्स हुए. दे ऑप्टेड टू गेट देयर डिबेंचर्स. अब 200 डिबेंचर होल्डर्स को पूरा कन्वर्जन नहीं, उसका 20% ही कन्वर्ट होगा बिकॉज 20% ऑफ द होल्डिंग्स. सो वन डिबेंचर हु वाज होल्डिंग 20,000 rupees के debentures opted to get himself converted into equity shares. You are required to calculate the number of shares issued and the cash paid for redemption of rupees 20,000 debenture holders. Very good. Let's start. The amount of debenture holders who opted for conversion is equal to 20,000. Next line में, therefore number of debentures who opted for conversion is equal to 20,000 divided by 100. That comes to 200 debentures. Now percentage of debentures to be converted is equal to 200 into 20%. That comes to 40 debentures. Amount of debentures converted into equity shares is equal to 40 into, what is the face value of the debenture? 100 and they were redeemable at premium of 5%. 40 into 105. That will give me, let's check, 40 into 105. 4,200. This is the amount to be payable to the debenture holders. Number of shares to be issued is equal to 4,200 divided by, what is the price at which we are issuing? 10 rupees ka share at 20. So can I say divide by 20? 2 2s are 4, 2 1s are 20, 210 shares of 10 at the rate 20. ये share issue कर दिए. Now how many people opted for cash? Total 200 debentures थे. So total number of debentures is equal to 200 less converted, how many? 40 debentures. This is the balance into balance amount payable in cash is equal to 160 into 105. Let's calculate.
160 into 105. That comes to 16,800. This is the amount payable in cash. That's it. Very simple sum they have asked for redemption of debentures. This is it. We have completed the sum. इसमें important part क्या था कि 20% conversion option available है. A debenture holding 20,000 face value of debentures get himself opted for conversion. तो पूरा 20,000 मतलब पहले तो number of debentures कितने हुए वो निकाले हमने. So पूरा conversion है उसका 20%. Then they are payable at a premium of 5%. So this is the amount payable to them, and we are not paying them amount. We are giving them equivalent amount of equity shares of 10 is at 20. So amount divided by issue price, we get the number of shares. Total debentures थे 200, उसमें से converted 40, तो balance 160 बचे. They opted for cash. That's it. Very simple sum. We have completed this sum. That is RTP November 2020, question number 8. Now let's move to question number 9, and it is investment accounting. It is investment accounting. Let's start. This question number 9A. So now it will be, I will write here 9A, investment accounting. Let's start investment accounting. Basically investment accounting में ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे. Let me take a quick recap. Whenever we purchase investments, we pass and enter investment to bank. Whenever we sell any investment, we pass and enter bank to investment. And two things more we need to study about this: the purchase price and sale price. Either they may be X interest or they may be cum interest. Cum interest मतलब the purchase price or the sale price includes interest, तो interest उसमें से remove कर देंगे. And if the purchase price or sale price is X interest, means interest we need to calculate it separately, that is purchase price does not include any interest. Next important part, whenever we purchase any debentures or shares, we calculate two things. One is the purchase price and one is the interest. But whenever we sell any debentures or bonds, we calculate three things. One is the sale price, one is the interest, and one is the profit or loss which arises on sale of such transaction. Next, we need to take care of the interest dates, when interest is payable annually and when interest is payable is semi-annually. तो chronological order में जाना है और interest का recording करना है. That's it. इसमें इतना ही part है. Let's move ahead. Investment accounting 9A. In 2018, Royal Limited issued 12% fully paid debentures of 100 each. Interest being payable half yearly on 30 September and 31st March of every accounting year. कितने डिबेंचर इशू किए? 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each इशू किए. हाफ ईयर इंटरेस्ट है सितंबर एंड मार्च. ओके, ऑन 1st December 2019, Mrs. Kumar purchased 10,000 of these debentures at 101 cum interest, means the purchase price includes interest. So interest उसमें से remove करेंगे. We'll separate interest part, we'll separate cost part. 10,000 number of debentures purchase किए. On 1st March 2020, the firm sold all of these debentures at 106 cum interest price. और सारे के सारे debentures बेच दिए, and the selling price also includes the interest element. So we need to remove the interest from the selling price also. You are required to prepare investment in debentures account in the books of Mrs. Kumar for the period 1st December to 1st March 2020. सिर्फ इतना ही काम करना है. 1st December से 1st March. Very small question. Let's prepare it. This is books of who has invested, books of Mrs. Kumar. Investment in 12% debentures of Royal Limited. So this is books of Messrs. Kumar. This is investment in 12% debentures of, what is the company's name? Royal Limited. From, I will not say for the year, it will be from 1st December 2019. From 1st December 2019 to 1st March 2020. Yes. Now let's prepare the ledger. जैसे नॉर्मल करते वैसे ही करना है. दिस इज डेबिट,
only 2 transactions, one purchase and one sale. Date, this will be particulars, this will be working note, this will be face value, this will be interest, this will be cost, this will be date, particulars, working note, this is face value. Let me do the face value proper. Face value, we have interest, we have cost column. इतना बड़ा ज़रूरत ही नहीं है, because only one transaction, one purchase, one sale. Okay, let's start. सबसे पहले कभी परचेज किया? He purchased on 10,000 debentures on 1st December 2019. So 1st December 2019 पे परचेज किया. Let me draw this lines. 1st December 2019. Investment account debit to bank account. Working number 1. Calculation of purchase price and interest. One is the cost price. 10,000 debentures purchase किए into what is the purchase price? 101 कम interest. So this the purchase price includes interest. So calculate करते हैं 10,000 into 101. That comes to 10,10,000. Now less interest. Less interest. Interest किसके कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे. 10,000 मतलब एक डिबेंचर कितने का है? 100 का है. सो कहने से दिस इज 10 lakhs इंटू 12%. सितंबर एंड मार्च इंटरेस्ट डेट्स है. सितंबर एंड मार्च हम लोग अभी 1st दिसंबर पे, तो लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया होगा कंपनी ने? सितंबर में. सो अक्टूबर एंड नवंबर 2 months का इंटरेस्ट आएगा. लेट्स कैलकुलेट. दिस इज 10 lakh इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12. दिस कम्स टू 20,000. यस, सुपर्ब. बहुत ही सिंपल सम है. इसमें सुपर्ब एक्चुअली बोल रहा हूँ लेकिन कुछ है नहीं इसमें. तो 10 lakh 10 minus 20, this comes to 9,90,000. This is my purchase price. Very simple. दोनों चीज़ मिल गई. यहाँ पे 10 lakhs फेस वैल्यू में, इंटरेस्ट में 20,000, एंड कॉस्ट में 9,90,000. ओके, नेक्स्ट उसे कभी सेल किया? 1st मार्च को सेल किया. स्टेट 1st मार्च की एंट्री आएगी 1st मार्च 2020. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. दिस विल बी वर्किंग नंबर 2. लेट्स डू द वर्किंग नोट. कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस, इंटरेस्ट एंड P&L ऑन सेल. वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सेल प्राइस. व्हाट इज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स दैट वी सोल्ड? 1st मार्च पे ही सोल्ड. द फर्म सोल्ड ऑल दोज डिबेंचर्स एट 106 इंटरेस्ट. अब ऑल मतलब कितने भाई? 10,000 इंटू 106 आई सपोज. 1 सेकेंड. यस, 106 कम इंटरेस्ट. सो 10,000 इंटू 106, दिस 10,60,000. And this is come interest or less interest. Again interest is calculated on the face value. Face value 10 lakhs है, 12% rate of interest into
हम लोग 1 मार्च पे लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया? 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। 10 lakhs इंटू 12% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 50,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट मिल गया। दिस कम्स टू 10,10,000 अगेन। दिस इज नेट सेल प्राइस। And less cost. We follow weighted average method. If you remember, AS 13 बोलता है weighted average method follow करना है। Debit face value 10 lakhs, credit में कुछ है ही नहीं। Cost का debit total to 9,90,000. So 10 lakhs का इतना, तो वापस 10 lakhs का कितना? सेम ही आएगा ना। This is just the working part which I need to solve. So can I say there is no profit no loss? क्योंकि ये नहीं देखते पहले प्रॉफिट लॉस है कि 9,90,000 कॉस्ट आ गया। दिस इज टू बी इग्नोर्ड। 9,90,000 की चीज़ 10,10,000 में बेची तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल। सो आई गॉट ऑल द 3 थिंग्स। आई गॉट प्रॉफिट, आई गॉट द नेट सेल प्राइस एंड आई गॉट द इंटरेस्ट ऑल्सो। लेट्स रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। फेस वैल्यू में 10 lakhs, इंटरेस्ट में 50,000, सेल प्राइस में 10,10,000 एंड इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और इट अप्रिशिएट्स द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। दिस इज 1 March 20 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, वर्क नंबर 20 एंड द प्रॉफिट अमाउंट इज 20,000। दैट्स इट। लेट्स क्लोज। नथिंग इज गिवन। अक्रूड इंटरेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि 31 मार्च तक जाना ही नहीं है, 1 मार्च तक ही बनाने को बोला है। दिस इज 10 lakhs। दिस इज ऑल्सो 10 lakhs। यहाँ पे नील हो गया। कॉस्ट ऑल्सो 10,10,000, 10,10,000, इंटरेस्ट 50,000, कॉस्ट पूरा बिक गया तो टैली होगा ना। नाउ बट इंटरेस्ट विल हैव अ डिफरेंस। 50,000 minus 20, this is 30,000 and this will be transferred to P&L since it's a nominal account. 1 March 20. That's it. We have completed sum number 9A of RTP November 2020. Now let's move at 9B. 9B. But before that, that is also investment account only. But let me clear this. So this will be 9B now. I would like you people to read the question number 9B. By the time I will clear this, चलो 9B में जाते हैं. Okay, I hope you have gone through the problem. Question number 9B. Mr. X acquires 200 shares of a company on cum right basis for rupees 60,000. 200 shares acquire किए. Cum right मतलब the shares will be eligible for right issue, and the cum right basis value is 60,000. He subsequently receives an offer of right to acquire fresh shares in the company in the proportion of 1:1 at 105 each. मतलब उसको एक ऑफर मिला कि for every one share you will be issued one right share and the price of the right share will be 105 each. He does not subscribe but sells all the rights for 15,000. मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, मतलब वो रखने नहीं वाले, खरीद के डायरेक्ट आउटसाइडर को बेच रहा है for 15,000. So he is renouncing all the shares.
to an outsider. So whenever right shares are renounced or you sell it to an outsider, it will not be recorded in the investment account. It will be, the entry will be bank account debit to P&L. But some important point is given in this. The market value of the shares after they are becoming X rights, मतलब rights declare करने के बाद उनकी market value has also gone down to 50,000. मतलब before the right issue the market price was 60,000. After right issue the market price has gone down to 50,000. So can I say 10,000 reduction हुआ after X rights? What should be the accounting treatment in this case? Now they've explained this here. Let me read this. There is no need to solve here. Let me read this. As per AS 13, where the investments are acquired on कम right basis, मतलब आप जब भी कम right basis पे investment shares acquire करते हो, and the market value of the investments immediately after they are becoming X right is lower than the cost for which they are acquired. Means when you acquire the shares on come right basis and the market value after declaring the right shares immediately becomes lower than the cost for which they were acquired, मतलब after issuing right shares the market value goes down. So in such case what we need to do, it may be appropriate to apply the sale proceeds of rights. मतलब आपको कितना मिला right shares बेच के 15,000 रुपया. So it may be appropriate to apply the sale proceeds of rights to reduce the carrying amount of such investments to the market value. Means जो भी sale proceeds आपको मिला है, you should apply where? You should apply to reduce the carrying amount. मतलब आपका carrying amount मतलब what was the cost of investment now? 50,000. Please apply the sale proceeds to the carrying amount of the investments. So in this case the amount of X right market value of 200 shares bought by X immediately after the declaration of right falls to 50,000. मतलब 200 शेयर्स था, उसका बिफोर राइट्स इशू के पहले भाव था 60, आफ्टर राइट इट वाज 50. सो इमीडिएटली ये क्या बोल रहे, एक्स राइट मार्केट वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स बॉट बाय मिस्टर एक्स इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राइट, मतलब 200 शेयर जो खरीदे थे आफ्टर इशूइंग द राइट शेयर्स द मार्केट प्राइस फॉल्स टू 50,000. तो अब जो आपने राइट शेयर्स जो बेच दी आउटसाइडर को 15,000, उसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं. इन दिस केस आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ 15,000, 10,000 may be applied to the carrying, to reduce the carrying amount to bring it to the market value. मतलब 60 से 50 आया और आपने राइट शेयर्स तो आउटसाइडर को बेच दिए 15,000, तो आउट ऑफ दैट 15,000 यूटिलाइज 10,000 टू रिड्यूस टू राइट ऑफ द मार्केट वैल्यू. मतलब 60 से 50 10,000 का लॉस वाइप ऑफ कर दो एंड बैलेंस 5,000 वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम एंड यू शुड क्रेडिट इट टू P&L. ओवरऑल क्या बोला इन्होंने, आपने 200 शेयर्स परचेज किए कम राइट बेसिस पे फॉर 60,000 रुपीज. कंपनी डिक्लेयर्ड 200 शेयर्स खरीदे आपने, कंपनी डिक्लेयर्ड राइट इशू एट 105 इन द रेशियो 1:1. इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेयरिंग राइट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द 200 शेयर्स केम डाउन टू 50,000. कितने 50,000 पे आ गया. तो नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, द इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट्स द राइट शेयर्स व्हिच यू हैव सोल्ड इन द मार्केट फॉर 15,000, व्हाट ट्रीटमेंट यू शुड डू, यू शुड एडजस्ट द वैल्यू ऑफ राइट्स, मतलब दो सेल किया उसका वैल्यू सेल कंसिडर अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. मतलब 60 से 50 हो तो 10,000 से रिड्यूस हो गया, तो राइट्स इशू से जो पैसा मिला आपको बेच के उतना रिड्यूस, उतना वैल्यू को राइट ऑफ कर दो. मतलब 60 से 50 के लिए यूटिलाइज करो 10,000 एंड बैलेंस 5,000 ही इनकम रिकॉग्नाइज करो. दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9B. इट वाज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज फायर इंश्योरेंस क्लेम्स. क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज फायर इंश्योरेंस क्लेम्स. Question number 10. Fire insurance claims, and that is loss of stock. This time they've asked. Let's see what they've asked this time. Shyams go down. अच्छा, before we start, Shyams go down बोला मैंने. Fire insurance claims. What is the basic purpose behind fire insurance claims? Not a longer time I will take. कोई भी बिजनेसमैन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों निकालता है? To protect himself from the loss that he might incur if fire takes place. Now, so he takes a fire policy. So suppose if fire takes place in his premises or in his godown, he will lodge a claim with the insurance company कि मैं मेरा इतना नुकसान हो गया, मुझे मेरा इंश्योरेंस क्लेम दे दो. But for that you need to produce the records. अब रिकॉर्ड्स मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके इतने गुड्स जल गए, लॉस बाय फायर हो गया और ये डिजास्टर हुआ है.
सो हाउ विल प्रोड्यूस, हाउ यू विल जस्टिफाई. सो अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यू विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज गुड्स की बात कर रहे हैं तो गुड्स का अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट होता है. सो यू विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, यू विल प्रिपेयर मेमोरेंडम अकाउंट. अब ये दोनों में फर्क क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर 12 मंथ्स, एंड ये 12 मंथ्स कभी होंगे? प्रीवियस ईयर के, क्योंकि करंट ईयर में तो आग लगी है. तो यू विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर, and from the trading account you will find out the gross profit, and subsequently you will calculate the GP ratio. This is the accounting procedure what we do. Next, मेमोरेंडम अकाउंट क्यों बनाते हैं? करंट ईयर में जो साल में आग लगी है तो उसको मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं? मेमोरेंडम का मतलब रफ, क्योंकि पूरा साल कंप्लीट नहीं हो पाया, ड्यूरिंग द ईयर ही आग लग गई. सो मेमोरेंडम अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर. And in memorandum account, what is the main purpose behind preparing memorandum account? To find out the closing stock on the date of fire. मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक मेरे गोडाउन में या प्रीमाइसिस में पड़ा था. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेमोरेंडम क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो पूरे साल के लिए होता है. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द टिल द डेट ऑफ फायर. तो पिछले साल की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि पिछला साल एकदम नॉर्मल था. इट वॉज एंटायर 12 months. सो इन दैट account we used to calculate the GP and then the GP ratios. The same GP ratio will be applied in the current year, that is a memorandum account, assuming that same rate of GP we will earn in the current year had fire not taken place. So trading account में GP will be the balancing figure, in memorandum account closing stock will be the balancing figure, that is the stock on the date of fire. Okay, next important thing, suppose when fire takes place, as a rational businessman what you will do? You will try to save the goods and records. आप सारा गुड्स और रिकॉर्ड्स सब बाहर निकाल के रख दोगे. सो वॉट एवर गुड्स यू हैव सेव्ड दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ क्लेम विच यू कीप विद द इंश्योरेंस कंपनी. दैट सो दैट टर्म इज नोन एज सैल्वेज. Any goods withdrawn for personal use, any goods withdrawn by proprietor should be credited to trading account, because वो 12th standard में भी हम लोग पढ़ते थे कि goods withdrawn by partner, goods distributed for free samples should be credited to trading account. Over and above trading account and memorandum account, we prepare a statement of claim. मतलब ये स्टेटमेंट हम सबमिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को. स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में हम क्या करते हैं? क्लोज टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, अरे सॉरी, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स. एबनॉर्मल होगा तो आई विल एक्सप्लेन यू. एंड टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वी कैलकुलेट, देन फ्रॉम दैट वी डिडक्ट द सैल्वेज अमाउंट, एंड फाइनली वी फाइंड आउट द एक्चुअल लॉस. आफ्टर दिस वी सी वेदर इट इज अंडर इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस. अब अंडर इंश्योरेंस मतलब पॉलिसी अमाउंट इज लेस एज कंपेयर टू द लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर. मतलब आपका पॉलिसी अमाउंट समझो 5 लाख है और आपका लॉस हो गया 6 लाख का, तो कहना चाहिए यू आर नॉट फुल्ली इंश्योर्ड, यू आर अंडर इंश्योर्ड. सो व्हेनेवर यू आर अंडर इंश्योर्ड देयर इज अ क्लॉज व्हिच इज नोन एज एवरेज क्लॉज. सो व्हेनेवर देयर इज एन अंडर इंश्योरेंस, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल. एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी एवरेज पैसा कैलकुलेट करके देगी. एंड द फॉर्मूला फॉर एवरेज क्लॉज इज पॉलिसी अमाउंट अपॉन टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस. Policy amount upon total stock on the date of fire into actual loss. And the reverse case, full insurance की बात करता हूँ. 5 लाख की पॉलिसी और आपका लॉस हुआ 3 लाख का. Can I say your policy is greater than the loss? So it is a case of full insurance. जितना लॉस हुआ है that is 3 lakh, entire will be the claim amount. That's it. Let's start question number 10. Shyam's godown caught fire on 29th August 2020. This is the date of fire. And a large part of the stock of goods was destroyed. बहुत सारा goods जल गया था. However, goods costing 54,000 could be salvaged. This is the goods saved. This will be reduced from the claim amount. The trader provides you the following additional information. Cost of stock on 1st April 2019. ये previous year का opening stock है. ट्रेडिंग डेबिट बोलेंगे, प्रीवियस ईयर का है. तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020. ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक, मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक. ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक, मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक. परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2020. ट्रेडिंग के परचेजेस. परचेजेस फ्रॉम 1st April 2020 टू द डेट ऑफ फायर, मेमोरेंडम के परचेजेस. लेट्स मूव अहेड. Cost of goods distributed as free samples for advertising from 1st April 2020 to the date of fire. मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. ऑल्टरनेटिवली परचेज में से भी लेस कर सकते हैं. Cost of goods withdrawn by the trader for personal use from 1st April 2020 to the date of fire. अगेन ट्रेडिंग, मेमोरेंडम के ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि गुड्स विड्रॉन है. Sales for the year ended 31st March 2020. This is trading का sales. And sales from 1st April 2020 to the date of fire. This is memorandum का sales. Shyam had taken the fire insurance policy for 2,50,000 with an average clause.
So this is the policy amount, and average clause वो लोग बोल रहे will check whether policy amount is more or policy amount is less with the loss on the stock of date of fire, and then we'll decide whether average clause is applicable or not. Calculate the amount of the claim that will be admitted by the insurance company. Consider that the rate of gross profit up to the date of fire is same as that of the previous accounting year. मतलब ये लोग बोले कि जो previous year में आपको GP मिलेगा वही आपका करंट ईयर में भी जीपी एप्लीकेशन, तो नॉर्मली वैसे ही होता है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. फर्स्ट आई विल बी ओनली ट्रेडिंग. डेबिट क्रेडिट. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक. $3,55,250. नेक्स्ट इज टू परचेजेस. सिर्फ ट्रेडिंग की आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे, मेमोरेंडम बाद में. Purchases 28,39,800. 28,39,800. फिर सेल्स दिया हुआ है. $40 lakhs. Since this is trading account, we are left with two things. One is closing stock and one is the GP. But trading account में GP is the balancing figure, so let's calculate closing stock. They have given closing stock 3,95,050 rupees. That's it. Let's calculate the GP. This is 40 lakhs plus 3,95,050. This comes to 43,95,050 rupees. यहाँ पे भी 43,95,050 rupees. Minus 28,39,800 and minus 3,55,250. This 12 lakh का GP. This is to gross profit, and subsequently क्या निकालेंगे? GP ratio. This is GP upon sales into 100. It's 12 lakh upon 40 lakhs. 200. 12 lakh divided by 40 lakhs into 100. 30% is the GP ratio. Super. Now we'll prepare memorandum trading account. Memorandum trading account. This will be from 1st April 20 to date of fire क्या है? 29th August 2020. Okay, let's start. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा मैं. So this is basically normal sum, no abnormal goods in this. Opening stock 3,95,050. Next will be my purchases. Let's see the purchases amount. 16,55,350. 16,55,350. Next, what is my sales? 22,68,000.
there were two things. One is goods distributed as pre-samples. The amount is 20,500 and they are at cost price, so no issues. By goods distributed as pre-samples. अगर ये सेलिंग प्राइस पे होते तो इसको कॉस्ट पे लेके आना पड़ता था. कितना है? 20,500. And by goods withdrawn, by trader, what is the amount of goods withdrawn? 1,000 rupees. So all transactions have been recorded. Now this is memorandum account. So first we'll find out gross profit because last year का GP ratio applicable होता है. Assuming had fire not taken place, I would have earned the same rate of GP, that is 30%, and 30% on sales, so 22,68,000 का 30%. Okay, 22,68,000 into 30%. This comes to 6,80,400. Let's do the totalings. We'll get the closing stock as the balancing figure. 6,80,400 plus 16,55,350 plus 3,95,050. This comes to 27,30,800. Less 1,000, less 20,500, less 22,68. 4,41,300 is the closing stock. This is by closing stock, and this is my stock on the date of fire. Now we'll prepare statement of claim. Estimated stock on the date of fire. This is what I write. This is estimated because this is estimated GP. Normal goods कितने? 441,300. There are no abnormal goods. We'll write and we'll keep a dash. So this is 441,300. This is total stock on the date of fire. Less salvage. Yes, there is a salvage. Let's check the salvage amount. Starting में दिया था salvage 54,000. So let's deduct 441,300 minus 54,000, 3,87,300. This is my actual loss. Now we'll compare the policy amount. What was the policy amount? 2,50,000. You should compare the policy amount with the total stock on the date of fire, not with the actual loss. I repeat, you should compare the policy amount with the total stock on the date of fire. So 2,50,000 is the policy and total stock on the date of fire is 441. Can I say it is a case of under insurance? And if it is a case of under insurance, then average clause is applicable. So let's calculate average clause. Average clause is equal to what? Okay, policy amount upon total stock on the date of fire into actual loss. Policy amount 2,50,000 upon 3,87,000 upon 4,41,300. Sorry, 4,41,300 into actual loss में आएगा 3,87,300. Let's calculate 2,50,000
divided by 4,41,300 into 3,87,300. This comes to 2,19,409. 2,19,409 rupees. 2,19,409. This is my claim amount. मुझे इतना ही पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी because I am under insured. That's it. इसमें नोट लिखनी चाहिए. Where should I write? यहाँ पे लिखते हैं since policy amount is rupees 2,50,000, which is less than total stock on date of fire. That is total stock on date of fire कितना है 441,200 rupees 441,300. It is a case of under insurance. You should give the justification ना कि क्यों under insurance लिया. Therefore average clause is applicable. That's it. This is how you should give the explanation. So this is how we have completed sum number 10 of the RTP November 2020. Superb. Let's move ahead. Now we'll go for sum number 11, and I feel that is hire purchase transactions. Yes. So let me clear this. By the meanwhile, you go through the hire purchase question. Okay, so sum number 11 is hire purchase. Please go through the question. I am reading it. Okay. Now this is question number RTP November 2020. Question number 11. Hire purchase. Let's start. X purchased 3 cars from Y on hire purchase basis. The cash price of each car being 2 lakh. 3 गाड़ी खरीदी, हर गाड़ी का कॉस्ट 2 लाख, तो कहने से 3 कार्स का कॉस्ट 6 lakhs. द हायर परचेजर चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. WDV मेथड पे हायर परचेजर चार्ज करता है डेप्रिसिएशन. 2 कार्स वर सीज्ड बाय ऑन हायर वेंडर व्हेन सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाज नॉट पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में सेकेंड इंस्टॉलमेंट ना भरने की वजह से वेंडर ने 2 गाड़ी सीज कर ली. दिस इज रीपोजिशन बोल सकते हैं हम लोग इसको. The hire vendor valued the 2 cars at cash price less 30% depreciation charge under diminishing balance method. मतलब वेंडर ने जब कार रिवर्स ले ली, रिवर्ट कर दी, रिपोजेस कर ली, तो उसने कैश प्राइस में से 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू काउंट की. Whereas the hire purchaser was charging 20% depreciation on WDV method. The hire vendor charged 30% depreciation on the WDV method when he repossessed the 2 cars. मतलब कहना है 2 गाड़ी वेंडर के पास और 1 गाड़ी हायर परचेजर के पास अभी भी है. द हायर वेंडर स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर्स ऑन द कार्स एंड देन सोल्ड देम फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 2,70,000. ठीक है, उसने 10,000 का रिपेयरिंग वर्क करवाया एंड उसको बेच दिया 1,70,000 में. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अग्रीड वैल्यू ऑफ द 2 कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर.
अग्रीड वैल्यू ऑफ द टू कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर, वेंडर कौन सी वैल्यू पे लेके गया उसकी वैल्यू निकालनी है, एंड द बुक वैल्यू ऑफ द कार लेफ्ट विद द हायर परचेजर, और जो गाड़ी हायर परचेजर का पड़ी है, एक गाड़ी पड़ी उसकी WDV या बुक वैल्यू, एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस टू द हायर परचेजर ऑन टू कार्स टेकन बैक बाय द हायर वेंडर, और हायर परचेजर को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो भी कैलकुलेट करना है. सो इट्स वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आई विल से कैलकुलेशन नंबर 1 में लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ agreed value of two cars taken back by hire vendor Let's solve one by one. So मैं इसको 1 का A बोलता हूँ. ओके, कैश प्राइस ऑफ 2 cars, there is 2 lakh into 2, 4 lakhs. This is less depreciation for first year at the rate 30%, क्योंकि वो 30% से लेके जा रहा है, तो 4 लाख का 30% is 1,20,000. I get a WDV of 2,80,000. Can I say this is written down value? Less depreciation for second year at the rate 30%. 2,80,000 का 30%. Let's calculate 2,80,000 into 30%. This comes to 84,000. तो ये हो जाएगा 1,96,000. So can I say this is the agreed value of the car taken back by the vendor. 2 साल का डेप्री चार्ज करके उसने ये वैल्यू पे लेके गया. Now let's go for 1B, जिसमें दूसरा पार्ट पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ कार लेफ्ट विथ hire purchaser. Let's start. Once again, you got 196, right? Yes. तो एक ही गाड़ी है, तो कैश प्राइस ऑफ 1 कार 2 लाख, लेस डेप्रिसिएशन for first year at the rate 20%. That comes to 40,000. This comes to 1,60,000. This is written down value. Less depreciation for second year
20%, 32,000 होता है, 16 का 20%. This comes to 128. This is the WDV of the car left with the hire purchaser. Superb. Second question, profit or loss to the hire purchaser on 2 cars taken back by the hire vendor. So this is my question number 2, calculation of profit or loss. On 2 cars taken back by the vendor, taken back by hire vendor, मतलब कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि दोनों की बुक्स में वैल्यूज अलग है ना. बुक वैल्यू of 2 cars, that will be 1,28,000 into 2. ये हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2,56,000 हो जाएगा. ये उसकी कीमत, एक गाड़ी की 120 तो 2 गाड़ी की 256 लेस वैल्यू कंसिडर्ड बाय द वेंडर, that is 196. तो मतलब बायर के हिसाब से 256 की वैल्यू, लेकिन 196 की वैल्यू ली तो 0,000 60,000 का लॉस हो गया उसको. दिस इज लॉस टू हायर परचेजर, क्योंकि उसके हिसाब से वैल्यू है 2,56,000 2 गाड़ी की, और वेंडर के हिसाब से वैल्यू है 196 ये रही. So can I say there is a loss to the hire purchaser to the extent of 60,000. This is it. Very simple question on hire purchase. Now let's go for the next problem, that is departmental accounts. Question number 12. Please read that. By the meanwhile, I'll clear this. Let's go for departmental accounts. Okay. Question number 12, departmental accounts. Departmental. Please read the problem. Then we'll start. Okay. Let's start. Departmental accounts. Question number 12. Department X sells goods to Department Y at a profit of 50% on cost. So cost को 100 लेंगे because it is percentage on cost. And to Department Z at 20% on cost. तो X Y को भी बेचता है, Z को भी बेचता है and the respective cost. Department Y sells goods to Department X and Z at a profit of 25% and 15% respectively on sales. Similarly, Y X और Z को बेचता है लेकिन respective percentage on sales, तो in this case sales will be 100. Department Z charges 30% profit on cost to Department X and 40% profit on sale to Y. अब यहाँ पे ज़्यादा ट्विस्ट है. Z X को बेचता है on cost एंड Y को बेचता है ऑन सेल्स. तो एक में कॉस्ट 100, एक में सेल्स 100. स्टॉक्स लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर इज अंडर.
एक्स ने ट्रांसफर किया था वाई को 75,000 का गुड्स एंड जेड को 48,000 का गुड्स विच आर स्टिल लाइंग इन द क्लोजिंग स्टॉक. ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई, वाई ने ट्रांसफर किया था एक्स को 50,000 के गुड्स और जेड को 82,000 के गुड्स एंड जेड ने ट्रांसफर किया था एक्स को 52,000 के गुड्स और 56,000 के गुड्स. कैलकुलेट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो द टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. वेरी सिंपल. लेट्स स्टार्ट. Calculation of unrealized profit in stock. Let's start. सबसे पहले X ने Y को और Z को बेचा, तो let's check डिपार्टमेंट X. X ने बेचा Y को, तो X to Y. Let's do the equation. CP plus P is SP. It is 50 on cost. So this is 100, this is 50, this is 150. तो Y के पास कितना गुड्स पड़ा है 75,000 का, तो 75,000 into 50 divided by 150. Let's calculate. 25,000. X ने Z को भी बेचा है. Let's do the equation. CP plus P is equal to SP. %20 on cost. 100 plus 20, 120. Now what is the amount of goods lying? 48,000. 48,000 यहाँ पे है into 20 divided by 120. 48,000 into 20 divided by 120. 8,000 आएगा. So can I say इसका टोटल हो गया 33,000. एक्स डिपार्टमेंट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. Yes. Now डिपार्टमेंट Y ले लेता हूँ. It will be Y to X. CP plus P is SP. Y ने X को कितने में बेचा? 25 and 15 on sales. तो sales 100, 25. This comes to 75. Y ने X को बेचा 50,000 के गुड्स, तो 50,000 into 25 upon 100. This comes to 12,500. फिर Y ने Z को भी बेचा है. This comes to CP plus P is equal to SP. 25 on sales and then it is 15 on sales. So this is 100. This is 15. This is 85. What is the amount of goods lying with Z? 82,000. So 82,000 into 15 divided by 100. Let's calculate 82,000 into 15 divided by 100. This comes to 12,300. The total unrealized profit कितना का 24,800. ये हो गया Y डिपार्टमेंट के साइड से 24,800. Now let's go for Z डिपार्टमेंट. Department Z, it will be Z to X. Let's see. CP plus P is SP. Be very careful. Z charges 30% profit on cost to department X. So 100 plus 30 is 130. Okay, Z ने X के पास कितना गुड्स पड़ा है Z का 52,000 का. सो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक डिपार्टमेंट का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स. सो 52,000 into 30 divided by 130, 12,000. And Z will transfer to Y also. This is CP plus P is SP. That was, I suppose, 40% profit on sales. So sales 100, profit 40 and the cost comes to 60 rupees.
That is also very important. Now, what is the amount of goods that Y holds? 56,000 into 40 divided by 100. This comes to 22,400. ओके, दिस इज इट, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम. इतना ही पूछा था, ये सारी चीज कैलकुलेट कर ली. 22 एंड 10 32, दिस इज 34,400. Total unrealized profit in stock, that is what they have actually asked after calculating all such things. That is 33,000 plus 24,800. ये X डिपार्टमेंट का, ये Y डिपार्टमेंट. 33 plus 24,800 plus 34,400. That's it. Let's calculate. Let me calculate this. 33,000 plus 24,800 plus 34,400. 92,200 is the final unrealized profit in stock. वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत अच्छा है. अगर 6 मार्क के लिए भी है तो कोई बुरा क्वेश्चन नहीं है. ये सिर्फ अनरियलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक निकाल के फिनिश कर दिया. प्लीज कॉपी दिस एंड गो थ्रू इट. कुछ डाउट है तो बोलो एंड देन वी मूव अहेड. I hope this is very clear. Let's move ahead. The next problem, that is question number 13, that is branch accounts. एक बार आप देख लो पूरा. फॉरेन ब्रांच का सम है. सम रिलेटिंग टू फॉरेन ब्रांच. Okay, I would like you people to go through foreign branch sum for 2 minutes, then I will start. Okay, I suppose you have gone through it. Now we can continue with the branch account. Okay, so this is a basically foreign branch का problem. Let me write the problem number, that is 13. Branch accounts. Foreign branch के ऊपर समय. So basically foreign branch, I would like to classify the branches into two parts. One is integral and one is non-integral. Integral branch मतलब dependent branch and non-integral branch मतलब independent branch. Basically आपको integral branch में क्या याद रखना है? All assets except fixed assets at closing rate आपको convert करना है. All liabilities at closing rate. So I repeat, all assets except fixed assets at closing rate. Fixed assets at historical rate.
all liabilities at closing rate, all income and expenses at average rate, and goods sent to branch will be actual amount given in the problem, and branch account HO account balance will also be given in the problem, so that will be actual amount. We just need to convert the trial balance from dollars into rupees. And if I talk about non-integral branch, everything remains the same. All assets including fixed assets at closing rate, all liabilities closing rate, all income and expenses average rate, goods sent to branch actual, HO branch current account actual. That's it. Opening stock opening rate in both the cases, and closing stock closing rate in both the cases. That's it. Let's start with the problem number 13 of the November RTP, November 2020. M&S Company of Lucknow has an integral foreign branch in Canberra, Australia. Head office Lucknow मतलब India and branch Australia में है. At the end of 31st March 2020, the following ledger balances have been extracted from the books of Lucknow office and Canberra branch. दोनों के ट्रायल बैलेंस दिए हुए. कैपिटल लखनऊ का दिया हुआ है 1500 crores, 1000 sorry. Reserves and surplus 1500. Land 500. 1 second. Buildings 1000. Buildings accumulate depreciation 200. ये सब लखनऊ ऑफिस का दिया है. We need to just convert the branch trial balance. Plant and machinery हेड ऑफिस का 2500, वेयर एज कैनबरा ब्रांच का 200. तो दिस विल बी कैलकुलेटेड एट हिस्टोरिकल रेट. प्लांट एंड मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 600 HO का एंड 130 ब्रांच का. तो दिस इज ऑल्सो एट हिस्टोरिकल रेट. ब्रांच के कन्वर्जन की बात कर रहे हैं. डेटर्स क्रेडिटर्स एट क्लोजिंग रेट. सो आई एम नॉट रीडिंग द अमाउंट्स राइट नाउ. Closing rate, opening stock opening rate, branch stock reserve, that is the profit element, but that is only with the head office, so nothing to be done. Cash and bank balances at closing rate, purchases / sales, that is income and expense average rate. Goods sent to branch, that is $5, it is equivalent to 100,000 rupees, that is 100 rupees, that is actual amount दिया हुआ है. मैनेजिंग पार्ट 100 HO की कॉलम में दिया हुआ है. मैनेजिंग पार्टनर सैलरी कुछ भी नहीं है हेड ऑफिस ब्रांच में. वेजेस एंड सैलरीज एवरेज रेट, रेंट एवरेज रेट, ऑफिस एक्सपेंसेस एवरेज रेट, और कमीशन रिसीट्स, दिस इज एन इनकम अगेन एन एवरेज रेट. HO branch current account $7 is equivalent to 120 rupees of Indian. You are required to convert the branch trial balance given above into rupees by using the following exchange rates. Opening rate $1 is 50, closing $1 is equal to 53, average rate is $1 is equal to 51, and for fixed asset $1 is equal to 46. So what will be the format? Basically particulars: debit dollar, credit dollar, debit rate, conversion rate, and debit rupees, credit rupees. That's it. This is a very simple sum. Let's start. Trial balance बनाएंगे. This is books of M&S Company Limited. कौन सा ट्रायल बैलेंस है ये? Let me check. Canberra Australia branch trial balance. Canberra. Canberra Australia branch trial balance. As on 31st March 2020. इधर ही लिख देते हैं. Let's prepare the trial balance. How many items are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12 items easily आ जाएंगे. So this is particulars. Let me see. This is debit dollar. This will be credit dollar. This will be rate at which we convert. This will be debit rupees, and this will be credit rupees. Let's start posting. What we'll do, we'll write all the particulars, we'll write the rate also with the dollars, and then we'll multiply at the last. सबसे पहले स्टार्ट होता है प्लांट एंड मशीनरी.
कितना डॉलर्स है? $200 है. उनका रेट भी लिख देता हूँ मैं. 46 is the historical rate. We'll multiply at the end. This is plant and machinery. ब्रैकेट में accumulated depreciation. What is the dollar? 130 है. रेट 46 ही होगा इसके लिए भी. नेक्स्ट इट इज स्टॉक ऑन 1419. कितना डॉलर्स है? $20. एंड ओपनिंग रेट लगेगा इसको. ओपनिंग रेट कितना है? ₹50 का. नेक्स्ट, बट बिफोर स्टॉक आई फॉरगॉट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. एक मिनट. This is debtors / creditors. $60 debtors है, 30 creditors है, but both are assets and liabilities. So closing rate 53. Stock on 1419. $20 का स्टॉक था एंड ओपनिंग रेट है ₹50 का. ब्रांच स्टॉक रिजर्व आएगा नहीं. कैश एंड बैंक बैलेंस कि एचओ में है वो तो स्टॉक रिजर्व. चलो कैश एंड बैंक बैलेंसेस $10. क्लोजिंग रेट 53 है. नेक्स्ट परचेज / सेल्स. Purchases / sales. Let me check the dollars. 20 and 123. This will be income and expense, so average rate, and the average rate is ₹51. Goods sent to branch. कितना डॉलर दिया है? $5. ये एक्चुअल होता है और उसका एक्चुअल वैल्यू दे दिया इंडियन हेड ऑफिस के कॉलम में. देखो 100,000. नेक्स्ट इज वेजेस. गुड्स एंड टू ब्रांच. पार्टनर सैलरी नहीं है. वेजेस एंड सैलरीज. कितने डॉलर्स है? $45. ये एवरेज रेट पे जाएगा. एवरेज रेट 51 है. वेजेस एंड सैलरीज के बाद रेंट, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस. रेंट अगेन एक्सपेंस है तो एवरेज रेट 12 एंड एवरेज रेट 51. एंड ऑफिस एक्सपेंसेस $18 है. अगेन एक्सपेंस है तो एवरेज रेट पे जाएगा. कमीशन रिसीट्स ₹100 की है. यहाँ पे क्रेडिट में डालेंगे. अगेन इनकम है, एवरेज रेट पे जाएगा. ब्रांच एचओ करंट अकाउंट. ब्रांच / एचओ करंट. अगेन दिस विल बी एक्चुअल. लेट मी चेक. $7 क्रेडिट में है, इज इक्विवेलेंट टू ₹120. Yes, and that's it. So now we'll calculate by multiplying all the amounts and then we'll decide what is the difference and all such stuffs. So 200 into 46 is 9,200. ये डेबिट में आएगा, ये डैश. फिर 130 into 46, this comes to 5980. फिर डेटर्स 60 into 53, this comes to 3180. और 30 into 53, 1590. 20 into 50, 2 5s are 10 and zeros, 1000. 10 into 53, this is 530. 20 into 51, 1020.
और 123 into 51 is 6273. 45 into 51 2295. सारे एक्सपेंसेस है. फिर 12 into 51 612. फिर 18 into 51 is 918. 100 into 51 5 1 and 00. This is the actually they have given HO branch account. Now let's do the totalings. I feel debit side is more or credit side. Let's say credit side first. 5980 plus 1590 plus 6273 plus 5100. This comes to 18,943. ये इतना टोटल आ रहा है. डेबिट साइड देखते हैं. 18,943. 9,200 plus 3180 plus 1000. वन सेकेंड, ये 7 इधर लिखा मैंने, 120 गलत लिख दिया. 120 यहाँ पे आएगा. डेबिट साइड देखते हैं. 9,200 प्लस 3180 प्लस 1000 प्लस 530 प्लस 1020 प्लस 100 प्लस 2295 प्लस 612 प्लस 918. 18,855 टोटल आ रहा है ये डेबिट का. 18,855. वहाँ पे टोटल देखते हैं. 5980 प्लस 1590 6273 5100 plus 123. So 19,063. So credit side is more. So we'll write the total. Credit side is more. Okay, यहाँ पे 19,063. 19,063. और इसका टोटल था 18,855. 208 का लॉस बोलेंगे. लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स. Liabilities are more than assets. This is 9,200 plus 3180 plus 1530 plus 1020 plus 100 plus 2295 plus 612 and 918. 18,855. So 208 का लॉस हो गया. Yes, this is exchange loss. P&L डेबिट करना चाहिए. That's it. This is foreign branch. We have completed. Okay, let me clear this. Very simple sum. खाली ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला था. Now we'll move for the next problem, that is accounting for incomplete records. You know, single entry method, that is a very important chapter from group 1 point of view, but we'll continue. We'll continue single entry problem after a break. We'll continue the problem after a break. Thank you.